चीज की है? ये किसके है? सांस के है? Morning chanting, page 2. Yo so bhagava arhan sambuddho swakhato ye bhagavata dhammo supatipanno yassa bhagavato sangho tamayam bhagavantam sadhammam sasangham imehi sakari yatha arham aropitehi abhipujayama sadhuno bhante bhagava suchirpa nibutopi pachima janata nukampamanasa ime sakari dugat panakara bhuti patiganhatu amhakam viratam hitaya sukhaya arham samma sambuddho bhagava buddham bhagavantam abhivadi swakhato bhagavata dhammo dhammam namassa supatipanno bhagavato savaka sangham namo handmayam buddhasya bhagavato pubbabhag namakaram karumase namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. त्रिरत्न वंदना हंदमयम रतन तय पनाम गाथा यो चीव संवीग परिकीर्तन पाठन च भणामसि बुद्धो सुशुद्धो करुणा महान्नवो लोचन्त शुद्ध बर्यान लोचनो वन्दामि बुद्धम् अहम् आदरेण तम् धम्मोपदीपो वियतस्य सत्तुनो यो मग्गपाकामतभेदभिन्नको लोकुत्तरो यो च तदत्तदीपनो वन्दामि धम्मम् आदरेण तम् संघो सुखेताभ्यतिखेत संनितो यो दिट्ठ संतो सुगतानुबोधको लोलपहीनो अरियो सुमेधसो वन्दामि संघम् अहम् आदरेण तम् पुण्यं मया यम मम सबुपद्दवा माहोन्तु ते कस्य प्रभाव सिद्धया इद तथागतो लोके उपन्नो अर्हं सम्मा सम्बुद्धो
धम्मो च देशितो नियानिको उपशमिको परिनिमानिको संबोधगामि सुगतपवेदितो मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानाम जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोक परिदेव दुःख दोमनस्सु उपायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो प्येहि विपयोगो दुःखो यमपि इच्छं न लभते तमपि दुःखं संकीर्तेन पंचुपादान खंदा दुःखा सेयतीदं रूप उपादान खंदो वेदनो उपादान खंदो संयोग उपादान खंदो संहार उपादान खंदो विज्ञान उपादान खंदो ये संपरिज्ञाय धर्मानु सो भगवा एवं बहुलम सावके विनेति एवं भागा च पनस भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति रूपम अनित्यम वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या विज्ञानम अनित्यम रूपम अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानम अनत्ता सब्बे संखारा अनित्या सब्बे धम्मा अनत्ताति ते मयम् ओति नाम जातिया जरा मरणेन शोकेहि परिदेवेहि दोमनस्येहि उपायासेहि दुःखोतिना दुःख परेता अप्येव नाम इमस् केवलस् दुःख खंदस् अंत क्रियाय पञ्यायेथाति चिर पर निभूतमपि तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति यथा बलं मनसि करोम अनुपटिपजाम सा नोपटिपत्ति इमस्य केवलस्य दुःख खंदस्य अंत क्रियाय सम्मततु Trudava. Now listen to Dhammapada, chapter 19. नतेन होति धम्मट्ठो येन अत्थं सहसानये यो च अत्थं अनत्थं च उभो निच्छेय पंडितो असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य कुतो मेधावी धम्मट्ठोति पौच्यति न तेन पंडितो होति यावता बहु भासति खेमी अवेदी अभयो पंडितोति पौच्यति न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति यो च अपंपि सुत्वान
ධම්මං කායේන පස්සති සවේ ධම්ම ධරෝ හෝති යෝ ධම්මං නප්පමජ්ජති නතේන තේරෝ හෝති යේනස්ස පලිතං සිරෝ පරිපක්කෝ අයෝ තස්ස මොඝජින්නෝති උච්චති යං හි සච්ඡං ච ධම්මෝ ච අහිංසා සංයමෝ දමෝ සවේවන්ත මලෝ ධීරෝ තේරෝ ඉති පෞච්චති නවා කරන මත්තේන වන්න පොක්ඛරතායවා සාධු රූපෝ නරෝ හෝති ඉසුකී මච්චරී සඨෝ යස්ස චේතං සමුච්ඡින්නං මූලඝච්ඡං සමෝහතං සවන්ත දෝසෝ මේධාවි සාධු රූපෝති උච්චති නමුණ්ඩකේන සමනෝ අබ්බතෝ අලිකං භනං ඉච්ඡාලෝභ සමාපන්නෝ සමනෝ කිං භවිස්සති යෝච සමේති පාපානි අනුන්තෝලානි සබ්බසෝ සමිතත්තාහි පාපානං සමනෝති පෞච්චති නතේන භික්ඛු හෝති යාවතා භික්ඛතේ පරේ විස්සං ධම්මං සමාදාය භික්ඛෝ හෝති නතාවතා යෝධ පුඤ්ඤං ච පාපං ච බාහෙත්වා බ්‍රහ්මචර්යවා සංඛාය ලෝකේ චරති සවේ භික්ඛෝති උච්චති නමෝ නේන මුනි හෝති මූලහ රූපෝ අවිද්දසු යෝච තුලං පග්ගයිහ වරමාදාය පණ්ඩිතෝ පාපානි පරිවජ්ජේති සමුනි තේන සෝමුනි යෝමුනාති උභෝ ලෝකේ මුනි තේන පෞච්චති නතේන අරියෝ හෝති යේන පානානි හිංසති අහිංසා සබ්බපානානං අරියෝති පෞච්චති නසීලබ්බත මත්තේන බාහු සච්චේන වාපුන අථවා සමාධිලාභේන විවිච්ච සයනේනවා පුසාමේ නෙක්ඛම්ම සුඛං අපුතුජන සේවිතං භික්ඛු විස්සාස මාපාදී අපත්තෝ ආසවක්ඛයං සාදු සාදු साधु ये जो है ना इसका ये समझ नहीं आ रहा ऊपर ही आपने इसके बाद आपने एरो लगा रखा ना सबसे टॉप वाला जो है सबसे टॉप वाला वो कैसे पहले क्या है बीच में लाइन हाँ हाँ ये जो है ना पहले जो लिखा हुआ पेंसिल से मूल रूप विद्वान पहले ये पढ़ना है अच्छा फिर उसके बाद मात्र मौन से न होता मुनि सुधार
अब हिंदी ट्रांसलेशन सुनेंगे। धम्मट्ठवग्गो न तीन होती धम्मट्ठो ये नत्थं सहसानये यो च अत्थं अनत्थं च उभो निच्छेय पंडितो। सहसा साधे अपना अर्थ, न होता वह धर्मिष्ठ, जो अर्थ अनर्थ दोनों का विचार करे सो कहलाता पंडित। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुप्तो मेधावी धम्मट्ठोति पवुच्यति। विचारवान समता पूर्वक दूसरों का मार्गदर्शन करता, ऐसा धर्म रक्षक मेधावी है धर्मिष्ठ कहलाता। न तीन पंडितो होती यावता बहु भासति खेमी अवेरी अभयो पंडितोति पवुच्यति। वह न होता पंडित जो केवल बहु प्रवचन देता, जो क्षमावान निर्वैर निर्भय सो पंडित कहलाता। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपमपि सुत्वान धम्मं काये न पश्यति। सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नापमज्जति। वह न होता धर्मधर जो बहुत प्रवचन देता, थोड़ा भी सुनकर जो धर्म का काया में अनुभव करता। धर्म में अप्रमत्त वह सचमुच धर्मधर होता। न तीन थेरो होती ये न सपलितं शिरो परिपक्को वयोतस्य मोघजिन्नोति उच्यति। मात्र केश पकने से न कोई थेर हो जाता, आयु तो पकी सही पर वह व्यर्थ को वृद्ध कहलाता। अब वृद्ध तो वृद्धि होगा ना, अब चाहे वो व्यर्थ में वृद्ध हुआ तो पाया नहीं कुछ। तो वृद्ध तो अपनी आयु के हिसाब से वृद्ध होगा ही ना, पाया नहीं कुछ, वो बात है। इसलिए लिखा ना मोग जिन्नो, व्यर्थ में वृद्ध हो गया, कुछ पाया नहीं। यम ही सच्चं च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सविवन्तमलो धीरो धीरोति पवुच्यति। जिसमें धर्म सत्य अहिंसा जो इंद्रिय संयम दमन करता, वह विगतमल धीर और धीर कहलाता। न वाक्करणमत्तेन वर्णपोखरतायवा यश्चेतं साधुरूपो नरो होति इसुकी मच्छरी सठो। मात्र वक्ता होने से या हो जिसका सुंदर रूप, ईर्ष्यालु मत्सरी शठ न होता कभी साधु रूप। यस्सचेतं समुच्छिन्नं मूलगच्छं समूहतं सवन्तदोषो मेधावी साधुरूपो विमुच्यति।
जिसने इन्हें निकाल दिया उखाड़ जड़ मूल, वह विगत मल मेधावी कहलाता साधु रूप। न मुंडकी न समनो अब्बतो अलिकम भणम, इच्छा लोभ समापन्नो समणो किम भवेस्सति। व्रत रहित मिथ्याभाषी, मात्र मुंडन से न होता श्रवण, इच्छा लोभ से भरा पुरुष कैसी भला होगा श्रवण। यो च समेति पापानि अणुं थूलानि सव्वसो, समित्तत्ता हि पापानं समणोति पवुच्यति। स्थूल सूक्ष्म सब पापों का जो करता शमन, शमन कर सब पापों का कहलाता सच्चा श्रमण। न तीन भिक्खु सोहोति यावता भिक्खते परे, विस्सम धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता। केवल दूसरों से भिक्षा मांग न होता कोई भिक्षु, संपूर्ण धर्म पालन करे तभी होता कोई भिक्षु। योधम पुण्यं च पापं च वाहित्वा ब्रह्मचर्यवा, संखाय लोके चरति स मे भिक्खुति उच्यति। जो पाप पुण्य से ऊपर उठ बनता ब्रह्मचर्यवान, ज्ञान पूर्वक संसार में रहे, वह कहलाता भिक्षु सुजान। न मौनी न मुनि होति मूल रूपो अविद्दसु, यो च तुलं वपग्गय्य वरमादाय पंडितो। मूढ़ रूप अविद्वान, मात्र मौन से न होता मुनि सुजान। जो पंडित माप तोल कर श्रेष्ठ करता ग्रहण। पापानि परिवज्येति स मुनि तेन सो मुनि, यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पवुच्यति। त्यागता सब पाप कर्म तब होता मुनि सुजान। जो मनन करता दोनों लोकों का, वह भी कहलाता मुनि सुजान। इसका मतलब क्या, दोनों लोकों का कौन से? मतलब इस लोक का और परलोक का। अच्छा, उसके बारे में भी सोचता है भविष्य के अपने। ऊपर के लोग का कैसे सोच सकते हैं? ऊपर के लोग का नहीं, पर अपने मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा उस सेंस में। अच्छा, ताकि उसके हिसाब से काम ठीक करेगा, नहीं तो इसी जन्म का सोचता रहेगा। न तीन अरियो होती येन पाणा निहिंसति, अहिंसा सब पाणानम अरियोति पवुच्यति। न वह होता आर्य जो प्राणियों का हनन करे, आर्य वह कहलाता जो सब प्राणियों की हिंसा न करे। न शीलबद्ध मत्तेन बाहु सच्चेन वा पुनः, अथवा समाधिलाभेन विवज्य शयनेन वा। न मात्र शील व्रत से
या बहुश्रुत होने से, न समाधि लाभ से या एकांत शयन से। कुसामिनीखम सुखम अपुथु जन सेवितम, देखो विस्सासमापादि अपतो आसवख्ययम्। अनुभव करता मैं वह नैष्क्रम्य निर्वाण सुख, पृथक जन न जिसका सेवन कर सकते। भिक्षुओं, आश्वस्त न बैठो जब तक आश्रव क्षय प्राप्त न करते। ध्यान करेंगे and we will listen to short reflection by Ajahn Candasiri. Title At Ease with the Five Khandhas. Offer some little bit of guidance, direction in ways of contemplating our experience. And not saying that this is something that you will have to do on a regular basis as part of your practice, but there may be elements of it that you find helpful just to use in your daily life even. So it's more to give a kind of an overview of ways of contemplating these five khandhas and contemplating the characteristics of the conditioned world: anicca, change; dukkha, unsatisfactory; anatta, not self. So we've already spoken a little bit about the body, and the way of contemplating that can be useful is just coming to the breath, as we have been doing, and just contemplating this natural process, the movement of the rib cage, the air creating a vacuum, the air flowing into the lungs, and then different air flowing out again, the exchange of substances through the lungs into the blood vessels, taking in what's nourishing, releasing what is the waste products, and then breathing these out. This continual exchange of air, of elements, as we breathe. While the air is within the form, within the body, we see it as part of the body. As we breathe in, fill the lungs, this is part of the body. And then a moment later it's breathed out and it's no longer part of the body, but out into the atmosphere. And then we breathe in some more air from the surrounding atmosphere. Becomes part of the body, then we breathe it out again. This very direct and immediate sense of interconnection with what's around us. We can have similar contemplation around food and drink, taking these substances into the body, to nourish the body, to become part of the body. Processes of digestion, processes of getting rid of the waste. Contemplating where the food comes from, contemplating what happens to it.
becomes part of our body, nourishes the body, and the waste is got rid of. Coming to an appreciation of the connection, the interconnection with everything that's around us. The body, part of a dynamic flow of conditions, of elements. The question that is sometimes asked is, where am I? Am I in my body? Which part of my body? The heart? The head? Where am I? When we contemplate in this way, we see that there's no fixed, solid me in any of it. Just a flow of changing conditions. Contemplating feeling, Vedana. Noticing within the body itself, pleasant feeling or unpleasant feeling, or neither pleasant nor unpleasant. Just depending on which part of the body we bring awareness to, which part of the body we're conscious of. There may be pleasant feeling, or there may be pain. When the lungs are irritated and we cough, that's unpleasant feeling. When there's pain in the knee, that's unpleasant feeling. The sensation of breathing can be very pleasant. The experience of the clothes touching the skin, usually fairly neutral, we don't notice. Unless our clothes are too tight or uncomfortable in some way, or a very particularly pleasant item of clothing, silk or soft wool or something, cotton that we might like the feel of, but normally doesn't really impinge very much. Learning how to contemplate our mood, noticing how some moods are very, very pleasant, some much less so. We want to get rid of them, to change them. Yet when we contemplate unpleasant feeling and contemplate the fact that it's impermanent, that we don't need to identify with it, little by little we develop the capacity to observe, to notice how it changes, to take an interest in feeling, Vedana. Contemplating perception, which is reliant on memory and reliant on the different sense bases, receiving impressions or recognizing thoughts as they arise in the mind. So we have eyes, organs of perception of sight, there are ears through which we hear, very complicated instrument, very refined, sensitive instrument that can pick up sound vibrations. Organs of taste, smell,
and tongue, which tastes, the nose, which has the organs of smell, and all the different receptors within the body itself that pick up bodily sensations. We call these the sense bases, the internal sense bases. And they receive impressions from our surroundings. These impressions are interpreted as recognition. Sometimes it's without any thought at all. If you smell a bonfire, for example, or toast, like the morning breakfast time, there's toast, you smell the toast. You don't have to think, oh, that's toast. You just know, toast. And if you're from another country, you'll call it something else. There'll be another word for it to describe the experience, the perception. Based on our experience, we know what it is because we've experienced it before. Sometimes we build up perceptions of different people, either people that we've met before or certain type of people, big people or small people, or people with a particular colour of hair or eyes or skin. We form a perception. And interestingly, these perceptions may have absolutely nothing to do with the person in front of us. It's just they have a particular style of bearing or colour of skin or clothing that reminds us of some experience we had long ago. If it was a pleasant experience, then we're immediately attracted to the person. We like the person, we want to be with them. If it was an unpleasant or frightening experience, we have a very different response. Maybe we become very defensive or aggressive, or just want to hide away. So perception is a very important thing to contemplate, and to recognize that it's not always the information that we have, it's not always in accordance with reality. We may misperceive things. So it can be very, very useful, and it needs to be challenged, questioned. Perceptions change according to our experiences. That changes according to our way of contemplating. So we may have a very fixed view of somebody or some situation. So maybe some word just brings up a very strong reaction in us. And yet if we contemplate it and look at what's really happening, see, it's just a sound. It's just the sound of someone's voice. It's just a person, a form. And we can change the perception. Our emotional responses, our ideas, our plans, our values, these all come into the category of sankhara, mental formations. Our interests, our qualities, our skills. Some of these may be wholesome, positive, helpful. Some of them may be extremely unhelpful. So we need to understand these things.
using the teachings, which in themselves are also mental formations. They're very skillful mental formations, and we can use them to bring a great to clarity and understanding. And they can be also used in less skillful ways. And they too are constantly changing, shifting. And while we might identify with them very strongly, the encouragement is to keep challenging that identification. Is this really the case? Or is it just a convention? In my heart of hearts, am I really a Theravada Buddhist nun? Certainly superficially, conventionally speaking, that's what I am. That's the label that's completely appropriate for this being sitting here. And yet ultimately, is that really what I am? So one exercise we can do is to just contemplate all the labels that we attach to ourselves, which have a relevance in certain situations, which have a validity in certain situations, and yet ultimately, when we sit quietly like this, is this really what I am? Is this really the most important thing about me? In certain contexts, yes. And yet when we're sitting quietly, they begin to seem less and less relevant. So contemplating sankharas, mental formations, and the tendency of the mind to create things, to create concepts, ideas about our experience, to make something of it. Just contemplating that. Like everything, it has a usefulness, and it can also be very less helpful, and can also be extremely harmful when our perceptions, our ideas are distorted. So contemplating sankharas, mental formations, how they change, how in themselves they don't satisfy, and how ultimately there's no self there. They're not self. They're not who and what we are, essentially. We cling to them, looking for an identity, and yet when we really look at them deeply, there's no identity there. It's just a creation of the mind. Contemplating sense consciousness, our capacity to see visual objects, our capacity to hear sound, to taste, to smell, to experience bodily sensations, to recognize thoughts in the mind as they arise, moods, mental objects, and to recognize the capacity that we have to shift our attention from sight to sound, to smell, to taste, to touch, to the mind. The movement of sense consciousness arising in relation to the different sense bases. This can move and change very, very rapidly indeed. And again, this is not who and what we really are. So these different phenomena, these different aspects of what we conventionally speak of as me, form, feeling, perception, mental formations, sense consciousness. The Buddha encourages us to keep reflecting on these things as they change, that they're not satisfactory. They're not who and what we really are. There's no self
in any of it. Ajahn Chah used to say that the most important thing in practice is to keep letting go. Letting go of all the ideas, the views, the opinions that we constantly create about ourselves and about each other. To recognize them, but to disengage, not cling on to them too tightly, to not identify with them, picking them up when they're useful, when they're appropriate, putting them down when they're not, learning how to recognize the difference. So sometimes hearing a lot of instruction like this, it can be clarifying in one way, it can also be confusing. We think, oh goodness me, what should I focus on? What should I be doing? How can I practice with all this? And what I would suggest is that you keep the breath there as a focus, as a place, as an anchor to return to, the breath, the body. Whether we're sitting with the breath, the posture, whether we're out on the walking path with the movement of the body, the feet touching the ground, using this as an anchor, and yet allowing the mind to wander a little bit more freely, contemplating these different aspects of our experience in terms of the three characteristics, anicca, dukkha, anatta, in terms of these 5 focuses of identity: form, feeling, perception, mental formations, sense consciousness. Having pointed to all of these different things that we can observe, the encouragement is to take up the place of the quiet watcher. You could call it the Buddha mind, the Buddha awareness, that which watches, which knows, which sees clearly things as they are. The arising and ceasing of conditions. We can watch, we can know, we can see clearly. This is how it is right now.
हम ब्रह्म विहारों का अभ्यास करेंगे। पहले मैत्री ब्रह्म विहार। अहंगवीरो अव्यापंजो अनिगो सुखी अत्तानं परिहरामि। मम माता पितु आचार्या च ज्ञातिमित्ता च सर्वब्रह्मचारिणो च अविराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। आरक्षा देवता भूमट्ठा देवता रुक्षट्ठा देवता आकाशट्ठा देवता अविराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। आप समस्त प्राणियों के प्रति, चाहे लंबे हों, छोटे हों, स्थूल हों, सूक्ष्म हों, और याद करके जिनके प्रति रोष हो, नाराज़गी हो, उनको भी याद करके उनके प्रति भी मैत्री का अभ्यास करते हैं। सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुंगला सब्बे अत्ता भावना सब्बा इत्थियो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका अविराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब करुणा ब्रह्म विहार। अपने प्रति, प्रियजनों के प्रति, उनके प्रति भी जिनके प्रति नाराज़गी है, वो भी अगर दुखी हैं तो उनके प्रति भी, और फिर समस्त प्राणियों के प्रति। इस समय जो लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं, उन सबको याद करके करुणा ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हैं। शुभकामना करते हैं कि सबके दुख समाप्त हो, कष्टों से बाहर आए, इस रोग का कुछ निवारण नहीं हो पाए। जिनके प्रति ऐसा भाव है कि वो गलत काम कर रहे हैं, परेशानी हो रही है सबको या हमको, उनके प्रति अगर मैत्री नहीं कर पाते तो भगवान कहते हैं करुणा रखनी चाहिए कि अगर वो सचमुच में गलत काम कर रहे हैं तो उससे हटें। अकुशल कर्म करने का जो अकुशल का फल आएगा, तो ये याद करके करुणा जगा सकते हैं उनके प्रति। विभिन्न कुशल उपाय हैं ताकि मन में द्वेष न जागे।
सभी के दुख मुक्त हों, सब प्राणी जो रोगी हैं रोग मुक्त हों, रोग उपचार की बाधाएं दूर हों। सभीतियो विवर्जन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तर्यो सुखी दीर्घाको भवतु सुखी दीर्घाको भवतु सुखी दीर्घायुको भवतु। कृतज्ञता ज्ञापन उनके प्रति जो इस सब विषम समय में, कठिनाई में अपनी चिंता न करते हुए लोगों की सेवा में लगे हैं, खासतौर पे वो डॉक्टर और सभी स्टाफ और अन्य सभी लोग जो आवश्यक वस्तुएं सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रहे हैं, उन सबके प्रति आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। उन सबके साथ अपने पुण्य साझा करें, पुण्यों को याद करके उनको साझा करें। पुण्यस्य दानि याना अन्यानि कथानि मे ते संच भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानिका। मौजूदा ब्रह्मविहार जो लोग रोग से मुक्त हुए हैं, प्रसन्न हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनको याद करके जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जिनके कुशल कर्मों के फलस्वरूप भी खुशी का वातावरण है उनके घर में, या हम अपनी कोई पुरानी बात जिससे हमें दूसरों को प्रसन्नता दी हो उसको याद करके मुदिता का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे भी अपनों के प्रति, अपने प्रति, अपनों प्रति, फिर सभी प्राणियों के प्रति और उनके प्रति भी देख सकते हैं जिनके प्रति हमारे मन में अच्छी भावना नहीं है, द्वेष है, और उनके घर पे अगर प्रसन्नता है तो क्या हम उनके प्रति भी मुदिता जगा पाते हैं। तो ये बड़ा कुशल उपाय है हम अपनी ब्रह्म विहार को पुष्ट करने का। इसीलिए ऐसे कमेंटोरियल लिटरेचर में ये सजेस्ट किया गया, शुरू करें अपने से, फिर अपने प्रियजनों से, फिर जो तटस्थ हैं उनसे, और फिर उनके प्रति भी कोशिश करें जिनके प्रति मन में द्वेष हो, नाराज़गी हो। सभी सुखी रहें, सुख संपत्ति बनी रहे, किसी प्रकार का व्यवधान न आए, प्रसन्नता में। यथा लब्धा संपत्ति तो मावे संतु भावापेक्षा
सर्वोत्तम ब्रह्मविहार, जो हमारी पारमी भी बनता है, सर्वोत्तम पारमी भी मानी जाती है, और सर्वोत्तम बोधि का अंग। यहाँ पे भी कमेंटोरियल लिटरेचर में कहा जाता है कि अपने प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति जो तटस्थ हैं उनके प्रति, और जिनके प्रति द्वेष है उनके प्रति। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम अपने प्रति या अपने प्रियजनों के प्रति अगर वो दुख में हैं, ठीक नहीं हो रहे, तो उपेक्षा का भाव रखना कठिन हो जाता है। तो अभ्यास इसी तरह करा जाता है। कई बार मन में ऐसा भाव लगता है कि इतने लोग मैत्री कर रहे हैं, शुभकामना कर रहे हैं कि रोग समाप्त हो, कम हो, लेकिन रोग तो बढ़ता ही जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। तो कई बार उससे खीज होने लगती है कि मन में भाव जागता है कि कुछ फ़ायदा नहीं होता ऐसा सब करने का। तो फिर उपेक्षा भाव रखना बहुत आवश्यक। ये हमें याद रखना चाहिए कि ये ब्रह्म विहार हम अपने चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को प्रसन्न रखने के लिए, कुशल चित्त की चेतना बनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी आशा कि हमारे ब्रह्म विहार का अभ्यास करने से लोगों का भला होगा, हम इसलिए दूसरों को मैत्री दे रहे हैं, ये धारणा उचित नहीं है। हाँ, हमारे शुद्ध चित्त से भाव करेंगे, दूसरे का लाभ हो सकता है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं होगा। उद्देश्य ये है कि हमारा मन शांत रहे, ताकि शांत चित्त से जो भी हम काम करें वो उचित ही काम करें। तो इस समझदारी से खास तौर पे उपेक्षा ब्रह्म विहार, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी परिस्थिति है उसको कर्मों के फल के रूप में देखेंगे तो मन का हिलना कम हो जाएगा। खासतौर पे जब दुख की परिस्थिति हो तो दूसरों को दोष देने का बहुत जल्दी, भासमान सत्य तो वही लगता है, तो उससे कैसे, उस प्रवृत्ति से कैसे बचें? भगवान की वाणी याद करके कि हम सभी अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। और समता बनाए रखने के लिए प्रज्ञा का पुष्ट होना आवश्यक, सम्यक दृष्टि का होना आवश्यक, क्योंकि सम्यक दृष्टि होगी, आर्य सत्यों को निरंतरता से ठीक से देख पाएंगे, दुख और दुख के कारण को समझ पाएंगे, तभी समता पुष्ट होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं, जैसे हम रदन सूत्र में चांट भी करते हैं, यथा इंद्रकीलो पथविंसितोसिया चतुहि वाते ही असंपकंपियो सोपमा तथो सुपमा सपुरुषं वदामि यो अर्य सच्चान अवेच्च पश्यति। हम सभी आर्य सत्यों को ठीक से समझ पाएँ, हमारी दृष्टि सम्यक हो,
ताकि दुख से मुक्त हो, कोई गलत काम न करें, फिर शोक और संताप से बचेंगे। ऐसी शुभकामना करते हैं। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमात्, मा किञ्चित् शोकमागमात्, मा किञ्चित् दुःखमागमात्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोक्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोक्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोक्ति भवन्तु मे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।